हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो स्टडी जोन। और ये बायो का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम सेल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है वो देखेंगे। तो जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। इन 1665 रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, ठीक है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की थी जिसमें वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे एंड इट रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। फ्री लिविंग cells were first discovered by Leeuwenhoek in 1674। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ठीक है, सेल में, इन सेल। परकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो परकिंजे साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म कॉइन किया था। शील्डन एंड शॉन पुट फॉरवर्ड सेल थ्योरी, तो शील्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी, अकॉर्डिंग टू विच ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Virchow further expanded the theory by suggesting cell arises from pre-existing cell। तो Virchow ने थ्योरी एक्सपेंड की थी कि सेल arises from pre-existing cell। अब हम टाइप्स ऑफ सेल देख लेते हैं। Despite the complexity and variety, all cells can be classified into two groups, namely prokaryotic cell and eukaryotic cell। prokaryotic Greek word है, तो pro means primitive और pre be before and carrion means nucleus, ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल्स लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस, तो ये ऐसे सेल हैं जिसमें ना न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस है वो लैक कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनल्स, इसके एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल, यू means true and carrion means nucleus, तो they have nucleus and membranes bound cell organelles। They are present in unicellular and multicellular plants and animals। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो साइज का है। जनरली जो साइज है प्रोकैरियोटिक सेल का वो स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल होता है जनरली 10 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है और एनक्लोज्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक सेल फिजन और बडिंग से होता है और यूकैरियोटिक सेल में मिटोसिस और मियोसिस इससे होता है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल आर लार्ज इन नंबर एंड लार्ज इन साइज एंड लेसर नंबर, तो वैक्यूल जो होते हैं वो लार्ज इन नंबर होते हैं और लेसर इन साइज होते हैं। और वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज एंड मोर इन नंबर एनिमल सेल्स में। न्यूक्लियस जो होता है वो लाई करता है वन साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में, और न्यूक्लियस लाई करता है सेंटर में इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेवरल सब यूनिट होती हैं जिसको गोगली एपैरेटस भी कहते हैं और डाइक्टोटोम्स भी कहते हैं। यूनिट्स ऑफ गोगली एपैरेटस कॉल्ड डाइक्टोसोम्स। तो गोगली एपैरेटस जैसे ये हैं गोगली एपैरेटस, इनके बहुत सारे होते हैं, उसको डाइक्टोसोम्स कहते हैं। प्रोमिनेंट एंड हाई कॉम्प्लेक्स गोगली एपैरेटस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो एनिमल सेल में प्रोमिनेंट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स गोगली एपैरेटस इज प्रेजेंट। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, एनिमल सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अब ये प्लांट सेल्स का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है ये पूरी जो बाउंड्री है बाहर वाली, ये मिडिल लेमेला है, ये इसके अंदर की जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल है ये, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है बाहर का न्यूक्लियर एनवलप है, इसके अंदर न्यूक्लियस है।
ये गोगली अपैरेटस है जो डाइक्टोसोम में बनता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ गोगली अपैरेटस डाइक्टोसोम्स। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये पतली पतली सी लाइन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये छोटी सी जो लाइन है। पैरोक्सियम, ये साइटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोचॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं, राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, गोगली अपैरेटस, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स देख लेते हैं। तो एनिमल सेल्स काफी कॉम्प्लेक्स है। ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये छोटे छोटे डॉट टाइप के लाइसोसोम्स, ये सेंटर में है सेंट्रियोल, ये राइबोसोम्स, माइटोचॉन्ड्रिया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइक्रोवेली, गॉगली अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियर में, और ये अंदर का जो है न्यूक्लियस, और ये अंदर का जो है ये पूरा जो है न्यूक्लियस है। सेल स्ट्रक्चर, सेल कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री है ईच सेल की, जो प्रेजेंट होती है एनिमल्स और प्लांट्स में, और इसके कंपोनेंट्स हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और मेन फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का वो है selective to allow selective molecules through it and act as a mechanical barrier for internal components and surrounding. The cell membrane is also called selectively permeable membrane. CO2 and oxygen are move across the cell membrane by a process called diffusion, spontaneous movement of substances from region of high concentration to a region where concentration of solute is low. तो diffusion के through CO2 move करते हैं सेल मेम्ब्रेन में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर की जो है। The movement of H2 across plasma membrane occurs by the process of osmosis. तो osmosis के थ्रू वाटर की जो मूवमेंट है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और osmosis movement of solvent is H2 from region of higher concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration. Movement of water across the cell membrane is affected by the amount of solute present in these cells. Three types of solutions depending upon the solute concentration. तो तीन तरह के solution है solute के जो concentration उस पर depend करके। Hypertonic solution, तो जो solute concentration है surrounding का, उसका जो medium अगर higher है than the solute concentration in the cell की concentration से, and when the cell is put in hypertonic solution, the cell loses water by osmosis. और इसका एग्जांपल है when a grape is put into sour solution, it becomes flaccid. This phenomenon is known as exosmosis. Hypertonic solution, if the medium of surrounding the cell has high H2O concentration, then cell very diluted, that is very diluted. Water enters cell through osmosis and cell swell up, and this process is called endosmosis. तो ये हमने जैसे चना देखा होगा, चना भिगो देते हैं पानी में, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये प्रोसेस जो है एंडोमोसिस है, तो स्वेल करता है, वो फूल जाता है पानी जब उसके अंदर जाता है माइंड के। When RBCs are put in hypertonic solution, water enters to the cell, endomosis and the cell burst. तो जब पानी RBC के अंदर हम अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे और वो वाटर सेल के थ्रू जाएगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। Isotonic solution, if the solute concentration is same as that of cell, there will be no net movement of H2 and there will be no change in the cell. तो isotonic solution मतलब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। Cell wall, in plant cell membrane is surrounded by another wall called cell wall. It is made up of cellulose whose function is to give structural strength to plant also to maintain its shape and size and provide rigidity to the plant. Cell wall का जो है वो plant में cell membrane को जो है plant में cell wall या होता है plant cell में, और वो rigidity और उसका shape and size को uniformity और maintain करता है। When a living plant cell loses H2O through exosmosis, there is a shrinkage or concentration of contents of its cell away from the cell, and this phenomena is known as plasmolysis. तो प्लांट में अगर वाटर लूज करता है सेल तो और उसका सिंक्रेज या कंसंट्रेशन होता है कंटेंट का, एंड अवे फ्रॉम द सेल वॉल होता है वो सेल वॉल के, तो इस फिनोमेना को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस, the nucleus is spherical and located in center of the cell.
It is separated from the cytoplasm. It is spherical and located in the center of the cell. It is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. In nucleus, two components are present: chromatin material and nucleus. Nucleus contains RNA and DNA present in the part of chromatin material. तो nucleus में जो है RNA एंड डीएनए होता है जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में. तो न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस लस. और न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है और डीएनए होता है जो कि उसके क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट होता है. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA or deoxyribonuclease. Chromosome consists of both DNA and histone proteins, and functional segment of DNA are called genes. तो जो functional segment है उनको genes बोलते हैं. In bacteria, nuclear membrane is absent. Bacteria में nuclear membrane absent होती है. Nuclear region is undefined, containing only nucleic acids, and this undefined region is called nucleoid. Cytoplasm. It is a jelly-like substance present between the cell wall, membrane and nucleus. Various organelles of the cell present in cytoplasm, that is mitochondria, Goggly bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. In eukaryotic cell, organelles are enclosed in well-defined membrane. In prokaryotic, member-bound cell organelles are absent. Cell organelles. Cell organelles are of following types: endoplasmic reticulum. It consists of double membrane. One of its end is connected to the plasma membrane, another to outer nuclear membrane. Protein and lipids are synthesized by endoplasmic reticulum. The protein and lipids are synthesized by endoplasmic reticulum. These fluid filled between the membrane are called cisternae. There are two types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. It is connected to the plasma membrane and looks rough due to the presence of ribosomes attached to its surface. Ribosomes are site of protein synthesis. The manufactured protein are transported to different part of the cell depending upon the need. A smooth endoplasmic reticulum. It is the site of fat lipid synthesis. तो जो smooth endoplasmic है वो site है fat lipid synthesis की. Protein and lipid together helps in the building of the cell membrane called membrane biogenesis. It also helps in detoxification of xenobiotic compounds. Goggly Apparatus. The first time observed by Camillo Goggly in 1898. It consists of semilunar shaped cisternae and flat membrane appear in a stacked manner. It synthesizes the complex sugar from simple sugars. Complex sugar को करती है ये synthesize from simple sugar. It is involved in the cell trafficking material synthesized near the endoplasmic reticulum and is packaged and dispatched to various targets. This is the structure of Goggly apparatus. Secretory vesicles, Goggly sacs, cyst. ये middle region है, trans region है, ये cyst region. Group of cistern is called dictosome. It is various enzymes are present in Goggly apparatus like glycosol transferase, sulfo and glucotransferase, oxidoreductase, phosphotase, phospholipase and kinase. Lysosomes. These are very small vacuole containing strong digestive enzymes and are also called as digestive bags or suicidal bags of the cell. Lysosomes are called digestive bags and the suicidal bags of the cell. Mitochondria. These are rods and spherical shaped organelles having a double membrane. The inner membrane is folded into finger-like structure called crystine, but the outer membrane is smooth. It contains enzymes for cellular respiration and also called as powerhouse of the cell. Mitochondria have their own DNA and it's semi-autonomous in nature. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell and it is semi-autonomous in nature. Ultra structure of mitochondria: outer membrane matrix, inner membrane of cristae. Plastids. They are present in plant cells only. So plastids are present only in plant cells. There are three types of plastids: chromoplast, which is colored due to the presence of pigments; chloroplast, green colored plastids. The green color is due to the presence of chlorophyll; and leucoplast, colorless plastids, store fats and starch. These are also possess their own DNA. Plastid consists of numerous membrane layer thalcoid embedded in the material called stroma. So thalcoid embedded in material called stroma. Vacuole. There are a small sac-like structure surrounded by single membrane called tonoplast.
In plant, large central vacuole is present as they are permanent, but animal cells are small. But in animal cells, they are small and uniformly distributed through cytoplasm. So vacuole जो है वो present है and permanent है, large central vacuole is present and they are permanent. But in animals, these cells are small and uniformly distributed. Centrosome. It is mainly found in the animal cells. It helps in the formation of spindle during cell division. Centrosome only found in animal and helps in the formation of spindle during cell division. Ribosomes. It synthesizes proteins that are used in cytoplasm and found free in cytoplasm. Ribosomes are formed in nucleus from ribosomal RNA and proteins. So they synthesize this protein. Ribosomes synthesize proteins that are used in cytoplasm and found free in cytoplasm. Smallest cell organelles in which it is not surrounded by any cell membrane. In prokaryotic, 70S ribosomes are present, while in eukaryotic, 80S ribosome is present. Both 70S and 80S is composed of two subunits. 70S, 30S small subunit, 50S large subunit, 80S, 40S small subunit, and 60S large subunit. S stands for Swedberg's unit, which is a sedimentation coefficient, and it gives indirect measure of density and size. This was plant basic unit of life. Okay, so questions अब देखते हैं हमने जो अभी पढ़ा है उससे related. Which of the following is called digestive bags? So digestive bags of the cell. So आंसर जो है इसका लाइवोसोम से अभी पढ़ा था हमने. ठीक है, क्या ये आंसर सही है? पहले का सी. ठीक है, हमने क्या मार्क किया? पहले का सी. ठीक है. Which of the following is called powerhouse of the cell? तो mitochondria is called the powerhouse of the cell. Goggly apparatus is absent in. ठीक है, तो ये absent किस में है? प्लांट में होता है गोगली apparatus, ब्लू ग्रीन एल्गी में, यीस्ट में या सेल्स में? तो सेल में तो होता ही है, तो ये आई थिंक इसका ऑप्शन होगा बी या सी. थर्ड का है सी. So it is absent in blue green algae. Yeast is complex structure, therefore yeast में है. Largest animal cell is. ठीक है, तो इसका आंसर है ostrich egg. But I'm confused in this. तो ostrich egg और nerve cells. There are two things. फोर्थ का सी. ठीक है, तो इसका आंसर है ostrich. नर्व सेल जो है लार्जेस्ट एनिमल सेल है. ठीक है ना, एनिमल सेल लार्जेस्ट nerve cell. Mitochondria are found only in eukaryotic cell, prokaryotic cell and plant cells. तो I think फिफ्थ का आंसर होगा डी. फिफ्थ का आंसर है ए, eukaryotic cells. फिफ्थ का आंसर है eukaryotic cells, क्योंकि ये पावर हाउस है, इसको पावर हाउस जनरेट करने में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है. Eukaryotic cell, largest cell in human body. So largest cell in human body is nerve cell. ठीक है, अभी ये देखा था एनिमल सेल का, तो यही है. ऑरेंज येलो कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू. ठीक है, तो क्लोरोफिल से तो ग्रीन होता है. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है. ठीक है, अब बचा क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, तो आंसर इसका है सेवंथ का डी, क्रोमोप्लास्ट. सेवंथ का जो आंसर है वो है डी. Liposomes are called digestive bags because liposomes are called digestive bags because of hydrolytic activity. क्यों ये वो क्या करते हैं? स्वेल हो जाते हैं और स्वेल होके फट जाते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस. ठीक है, तो ये क्या सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स. स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है स्मूथ. स्टार्च ग्रेन इज, क्योंकि रफ वाला जो है वो प्रोटीन को करता है. स्टार्च ग्रेन इज डेवलप्ड इन. तो स्टार्च का जो ग्रेन है वो डेवलप होता है 10th का जो है क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी यूनिट? तो जीन जो है वो हेरिडिटरी यूनिट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज permeable.
सेलेक्टिवली परमिएबल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग ही परमिएबल होती है, मतलब undefined region containing only nucleic acid in bacteria is undefined region containing only nucleic acid in bacteria is nucleoid. In prokaryotic which type of ribosomes are present? तो prokaryotic में कौन से ribosomes present होते हैं? तो इसका आंसर है 14th का A 70S 70S. In 70S ribosomes, what S stand for? So S stand for Sedberg unit. ठीक है, S stand for Sedberg unit, which is also called sedimentation. So in animal cells, centrosomes are involved in formation of spindle fibers during cell division. Membrane which encloses vacuole in plant cell is known as tonoplast. Cell organelles involved in detoxification of xenobiotic compounds. ठीक है, तो xenobiotic कंपाउंड के डिटॉक्सिफिकेशन, तो इसका आंसर है 18 का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर है राइबोसोम्स. सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो सेल थ्योरी थी वो पुट फॉरवर्ड की थी शील्डन एंड सोजवर्न ने. Who suggested that cell arises from pre-existing cell? तो pre-existing cell से arise करता है सेल, तो ये किसने पुट फॉरवर्ड की थी थ्योरी? तो शील्डन एंड शॉन ने तो नहीं की थी, ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने भी नहीं की थी क्योंकि इन्हें सेल डिस्कवर किया था. तो इसका आंसर है विरचॉफ. Virchow suggested that cell arises from pre-existing body. Who discovered nucleus? So nucleus was discovered by Robert Brown. तो Robert Brown ने discover किया था nucleus. Who discovered the free living cell? तो free living cell was discovered by Leuwenhoek. Who termed the con protoplasm for the fluid substance of the cell? तो परकिंजे ने टर्म किया था protoplasm for the fluid liquid. Cell loses water when put forward in hypertonic solution by a process called, ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम उसको पुट करते हैं और वो किस प्रोसेस होता है, तो उसका प्रोसेस जो है एक्सोऑस्मोसिस. अब ये सम हाई स्किल क्वेश्चन है. बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन हाईली सॉल्टेड पिकल्स ड्यू टू, ठीक है, तो पिकल्स में क्यों प्रेजेंट नहीं होते? बिकॉज बैक्टीरिया आर किल्ड बाय प्लाज्मोलिसिस. सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई होता है और बैक्टीरिया का सेल फट जाएगा अगर उसमें सेल श्रिंक हो जाएगा बैक्टीरिया का, क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा है, तो प्लाज्मोलिसिस से बैक्टीरिया आर किल्ड. मेजर रोल ऑफ गॉगली कॉम्प्लेक्स इज in trapping light quanta as energy transferring organelles or in glycosidation of lipids and proteins to produce glycolipids and glycoproteins or in digestive system. तो इसका आंसर है glycosidation of lipids and proteins to produce glycolipids and glycoproteins. Electron transport system is present in which of the following cell organelles? So electron transport system is present in which of the following system? So its answer is mitochondria. Enzyme used for Krebs cycle in mitochondria are located in mitochondrial matrix. Which of the following, which cell organelles chemical energy changes to utilize energy? So answer is mitochondria. What happened when green tomatoes turn red? Chromoplast chain. Chromoplasts are disintegrated and get converted into chromoplast. So chloroplasts get disintegrated and get converted into chromoplast. What supports the presence of DNA in the mitochondria and chloroplast?
So chloroplast and mitochondria are both originated as independent free living organisms. What supports the presence of DNA in mitochondria and chloroplast? Which of the following slows the selective digestion on cycloplasm organic by libosomes? So autophagy is the autophagy shows the selective digestion of cytoplasm organelles by lysosomes. Identify the correct matched pair. Nucleus. Nucleus transportation of macromolecules. Correct. Okay. Identify the correct matched pair. So correct matched pair is nuclear does RNA synthesis and glyrosome does glyroxylate cycle. Mitochondria contains DNA. 70 as ribosomes occur in prokaryotic. So these second is true. Mitochondria contain DNA. This is also true because DNA has mitochondria. Ribosomes are made up of phosphilo and oligosaccharides. Okay, so ribosomes are not found in Protostea and Monera. So only 1 and 2 are true. 70 as ribosomes occur in prokaryotic. And unit of cell membrane having an average thickness of having an average thickness of 75 angstrom. When dried raisin or apricots are put in plain water, so uh, so what happens is cell gains water and swells up. 12th is A. When RBCs are put in hypotonic solution, cells are likely to burst. Sorry, cells are not likely. Cells are likely to swell up and then burst. Cell plants and fungus and bacteria exist in hypotonic solutions without bursting due to the presence of cell wall. Which of the following is an organelle with an organelle? So ribosomes is an organelle within an organelle. Mitochondria and chloroplasts are known as self-autonomous in nature because they have their own DNA, and ribosomes they can make their own food. So answer is can exist independently. So answer is they can make their own food. In plant cell, plasmodesta is made up of calcium pectate. Fungal cell wall is composed of chitin. Bacterial cell wall is composed of pep peptido peptidoglycan. Much of DNA is localized in chromosome of nucleus. The other major constituent of chromosome is histone. Histone. A smooth endoplasmic reticulum is specialized for synthesis of lipid and steroids. These organelles are found predominantly in ovary. In living cell, the site of an anaerobic respiration is cytoplasm. Chemically, mitochondria is consist of proteins, lipids, phospholipids. So the answer is 23rd D, all of these. The type of chromosome present in mitochondria and chloroplast. So answer is 70S. Mitochondria present in mitochondria and chloroplast. In which of the following phase of replication of DNA take place? So it takes place in S phase. So hope this is fundamental unit of life. We are done with fundamental unit of life. So these are helpful for NTSE exams. Apart from that, other competitive exams like SSC, railway, etc., which ask quite a number of questions related to science and bio. So please do like, share, subscribe.
through his study zone. Thank you. Also do give your suggestion